Now let's discuss question number 5 of NCERT back exercise. Fifth question is, if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? अगर मून अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो हमें अर्थ क्यों नहीं दिखाई देती मून की तरफ खींचती हुई? According to universal law of gravitation, every object in the universe attracts every another object. We all know that the force of attraction between two objects is same, however, in wrong way. So the planet attracts the moon with the identical force because the moon exerts force on the earth, however, in opposite direction. Since earth is far larger in size than moon, then the acceleration cannot be detected on the earth's surface. Same as we have already discussed about apple and the earth, कि अगर apple earth की तरफ attract हो रही है तो why not earth attracted towards apple? Again, I have told you, according to Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. Having more mass, acceleration will be less, and as compared to moon, the mass of the earth is very large. That's why its acceleration cannot be detected. Next question, what happens to the force between two objects if the mass of the one object is doubled? क्या होगा फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अगर एक मास को हम डबल कर देते हैं? तो आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to m1 m2 upon r square, प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two objects and स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. लेकिन एक मास को अगर आपने 2m कर दिया तो फोर्स पे भी क्या असर पड़ेगा? इट बिकम्स ट्वाइस. फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा. तो F is equal to 2F. F is equal to 2F. So force is also doubled. Next, what happens to the force when the distance between the object is doubled and tripled? अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यानी r को अगर आप 2r कर देते हो या फिर 3r कर देते हो तो what will be the effect on the force? As you know the formula, F is equal to G m1 m2 upon r square, but here we have replaced r by 2r, and but you have to square 2r. 2 का square 4 and r square. तो 2 का square जब आपका 4 हो जाएगा तो F is equal to 1 by 4 of its initial force. क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 1/4, यानी जो पहले फोर्स था ना आपका उससे वो 4 गुना घट जाएगा. इट विल बी रिड्यूस्ड. क्या आएगा? वो आपका रिड्यूस हो जाएगा. And if it is tripled, then 3 का square क्या हो जाएगा? 9. Then the force will become 9F. तो force कितना हो जाएगा आपका? 9F नहीं होगा. It will be 1/9 of its initial force. 1/9 of its initial force. यानी second part भी आपको हो गया. अगर आप distance को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो तो force घटेगा. It will decrease by 1/9 of its इनिशियल फोर्स. अगर आप मास को बढ़ा रहे हो तो जो है इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द फोर्स, वो भी इंक्रीज होगा आपका. इफ masses of both the objects are doubled, then F is equal to G2m1 m2 upon r square. दोनों के masses को अगर आपने बढ़ा दिया तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4. यानी the force will become 4 times greater. 4 times greater than its actual value. उससे क्या होगा? आपकी उसकी actual value से वो 4 गुना बढ़ जाएगा. What is the importance of universal law of gravitation? We have discussed in the chapter. There are 3 to 4 points, like the motion of the moon around the earth. This is due to gravitational law. The force that binds North American nation to the world, that is also gravitational law. The tides because of the moon and the sun. This is again according to gravitation. The motion of planets around the sun. We have already discussed these points earlier in the chapter. Next, question number 8.
What is the acceleration of free fall? सबको पता है acceleration, the acceleration caused in an object when the object is falling freely under the effect of gravity alone. And on the earth, the value of g is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो क्या कितनी होती है? 9.8 मीटर पर second square होती है, and it is constant on the surface of earth, but it will vary from planet to planet, and it is irrespective of the mass of the object. Next, what do we call the gravitational force between the earth and any object? I have already told you about this. This is very simple. The answer is weight. Gravitational force is known as the object's weight between the earth and an object, and only the gravitational force of earth is known as gravity. Lekin though I know you know that weight is the force with which earth attracts any object towards itself. Next, question number 10. Amit buy few grams of gold at the polls as per the instruction of one of his friend. अमित ने क्या किया? few grams of gold खरीद लिया at the polls पे. He hands over the same when he meet him at the equator. उसने same जो few grams of gold था उसने अपने friend को hand over कर दिया, लेकिन वो उसको कहाँ पे मिला? Equator पे. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? Hint given है, the value of G is greater at the pole than the equator. और आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी. अगर मास इनटू ग्रेविटी है और पोल्स पे जो है क्या आएगा? G ज्यादा है तो मास भी क्या हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटी आप करोगे तो इट विल बी मोर. और इक्वेटर पे क्या है आपका? कम है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा? आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा. Therefore, Amit's friend won't believe the load of the gold bought. उसको ये लगेगा कि उसे कम मास का, उसने कम वेट का उसने क्या दे दिया? गोल्ड. Because the weight depends upon the G, and G is greater at the poles as compared to equator. And again, next question already discussed. Why will a sheet of paper fall slower than one is crumbled into a ball? A sheet of paper has a lot of area as compared to a crumbled paper ball. A sheet of paper must face a lot of air resistance. As a result, sheet of paper falls slower than the crumbled ball, because it does not depend upon the G, does not depend upon the mass of an object. What is question number 12? Gravitational force on the surface of the moon is 1/6 as strong as gravitational force on the earth. ये आप लोगों को पता ही है कि gravity of moon is 1/6 the gravity of. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? पहले तो आपको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 10 kg. Means this is only mass and you have to convert it into weight first. जो weight है आपका, weight in newtons of a 10 kg, मतलब अर्थ पे भी आपको weight निकालना है, फिर आपको मून पे निकालना है. तो you have given only mass 10 है, तो mass on earth क्या हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटी, यानी 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 न्यूटन. और जब आप मून पे निकालोगे वेट तो आपको क्या करोगे? 1/6 द वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑन अर्थ. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 98/6, दैट इज 16.34 न्यूटन. If you can calculate it by yourself, it's easy. Mass into gravity on earth 10 into 9.8 और 10 into 9.8 divided by 6 क्या हो जाएगा आपका? Gravity or weight on moon. Next question. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meters per second.
Calculate the maximum height to which it rises, the total time it takes to return to the surface of the earth. How you will calculate this? By helping the by taking the help of the given data, you can calculate. And I have told you about the equation of motion of free fall. You have to convert A into G and S into H. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second, means U is equal to 49 meter per second. Or you have to calculate maximum height. And when the object reaches at the maximum height, it will go like it will comes back to the earth, and at the highest point final velocity is 0. U पता चल गया, V पता चल गया, and G आपको पता है. When you are throwing the ball upwards, you have to take the acceleration due to gravity negative. Then you will apply the third equation of motion. V square is equal to U square minus 2GS प्लस आएगा. हाँ, माइनस इसीलिए डाला इन्होंने यहाँ पे बिकॉज वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट नेगेटिव एज बॉल इज थ्रोन अप, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया. और एस की जगह पे आप क्या लिखोगे? एच. वी क्या हो गया आपका? फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड यू इज 49 गिवन है आपको क्वेश्चन में. -2 into 9.8 into s. S is equal to, आप निकाल लो, it becomes 122.5 मीटर. S की बजाय आप इसे क्या लिख सकते हो? H भी लिख सकते हो. The total time, what you have to calculate, the total time it takes to return to the surface of earth. अगर कोई चीज ऊपर गई है तो पहले वो ऊपर जाएगी, फिर वो ऊपर से नीचे आएगी. तो it will take like 2 times. एक बार तो नीचे से ऊपर तक जाने का हाईएस्ट पॉइंट, फिर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने का टाइम. तो लेट द टाइम जो है आपका टोटल टाइम क्या हो जाएगा? अगर आप एक टाइम को टी ए ले लो, एक टाइम को टी डी ले लो, तो यू विल अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. बट ए की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया है? g. और g को हमने नेगेटिव इसलिए लिया है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स. एक तरफ का टाइम निकाल लो, दोनों उस दूसरी तरफ का टाइम भी आपका क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा. ठीक है. एंड दैट इज t इज इक्वल टू 5 प्लस 5. आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, t becomes 5 plus 5 and t is equal to 10 seconds. Then the total time क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? 10 seconds. Next question number 14. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में? A stone is released. Released means dropped. अगर किसी चीज को भी आप रिलीज कर रहे हो तो earlier it was at rest. कितनी हाइट से आपने उसको रिलीज किया है? 19.6 मीटर. आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. व्हाई जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड? बिकॉज आफ्टर टचिंग द ग्राउंड द ऑब्जेक्ट becomes like it comes at rest. So what is given in the question? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Initial velocity u is equal to 0 because you have dropped the object. And tower height is 19.6 meter. Tower की height कितनी है? 19.6 meter. And g आपको पता है 9.8 meter per second square. It is constant on the surface of earth. Sometimes g is equal to 10. It is given in the question. If it is not given, you have to take the value of g by yourself. That is 9.8 meter per second square. Consider third equation of motion. V square is equal to u square plus 2gs. V square is equal to plus, इसीलिए because the motion is downward. So 2 plus 9, 2 into 9.8 into 19.6. V square is equal to 38.4.16. V is equal to under root 338.4